Assalamu alaikum students, this is your biology teacher Faisal Said. Now this is the last chapter from the first year in audio video lectures जिसे हम chapter wise MCQs की list में complete करेंगे इंशाल्लाह. So we have to discuss with the practice exercise from the chapter number 1. They are the remains or impressions of living organism preserved in rocks. तो basically हम इनको consider करते हैं fossils. ठीक है, जितने भी fossils होते हैं these are the remains of the organisms preserved in rocks. तो इस लिहाज से हम उनको fossils कहते हैं. fossils की study को आप अच्छे से जानते हैं paleontology. अगर वो fossil animals हैं तो paleozoology, अगर वो fossil plants हैं तो आप उसे paleobotany consider करेंगे. Now it is the second MCQs. It is the study of fossils and their relationship to the evolution of life on Earth. So that will known as paleontology. Paleontology में आप study of fossils और फिर उसका उन animals की age का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कितने years पहले जो है वो पाए जाते हैं, जिससे evolutionary life on Earth में हमें help मिलती है. So that would be known as paleontology. Second one, third MCQs would be man has been able to produce food in greater quantities due to advancement in the biology particularly, जिसमें हमने food engineering और बहुत सारी दूसरी चीज़ों की टेक्निक अडॉप्ट कर ली हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी भी उनमें से एक ही है. Taxonomy is the study of naming and classification of the organisms. Then anatomy deals with the study of the relationship between organism, बिल्कुल नहीं. Development of an organism, बिल्कुल नहीं. Structure and function of the molecular नहीं. Structure of organs of organism and their particular location in the bodies of 5 would be delta. Structure of the organs of the organism की study को हम anatomy कहते हैं. Pollution of our surrounding in the recent past has resulted because of the rapid industrialization. जो है इसकी वजह से इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा बढ़ी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो बढ़ गई है एनवायरनमेंट में. द स्टेटमेंट मेड बाय अ साइंटिस्ट विच मे बी द पॉसिबल गेस टू द प्रॉब्लम. हम कहते हैं अगर हम ठीक है तो दैट विल बी पॉसिबल. द स्टेटमेंट मेड बाय द साइंटिस्ट विच मे बी द पॉसिबल गेस टू द प्रॉब्लम वुड बी हाइपोथेसिस कंसिडर किया जाता है. Then we have MCQs number 8. This is MCQ number 7. MCQs number 8. Men can now be saved from the fatal diseases by vaccination. So now we have been developed a technique of vaccination biotechnology that will prevent from different diseases. Malaria has been derived from the combination of two words which are, so it's a combination. Yani malaria has been derived from two words. Mal means bad and area means air, so it's a Greek word, malaria. Initially it was thought that this is a disease which been transmitted by the inhalation of the bad air. Then which one of the following best describe the scientific method? So doing experiments in laboratories, collecting all known facts on a subject, developing and testing hypothesis. So particularly developing and testing hypothesis जो है वो scientific methods को best describe करता है. Then we have biology is the living science, is a science of living organism. Bios mean life, logos mean study. Living organism classified into 5 kingdoms. Finally they have been, initially there was 2 but finally been classified nowadays into 5 kingdoms. The study of the microorganism is called microbiology. And then 14 MCQs, it is the very recent branch of biology known as biotechnology. Bio is a Greek word, means life. Bio is a Greek word, means life, and logos mean the study, so it's the study of life. Then agaricus, mushroom, yeast are including kingdom fungi. Study of the parasite is called parasitology.
their mode of inheritance, their life cycle as well. Molecules of living matter are mostly based on carbon because they are organic, 18th A option. Then the life emerged at the level of tissue cell, particularly the level of cell, and cell से आके फिर वो एटम लेवल पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है. सो सेल ऑफ सिमिलर टाइप फॉर्म्स टिश्यूज एंड देन टिश्यू से ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम बनते हैं. द अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड फाइलेटिक लाइनिएज. हम इसको फाइलेटिक लाइनिएज कंसिडर करते हैं जिसमें अनब्रोकन सीरीज होती है जिससे हमें एवोल्यूशन में हेल्प मिलती है, तो फाइलेटिक लाइनिएज कंसिडर होता है ये. Then different population interact to each other in a same place is called community. हम उसको community consider करेंगे different populations को. Along with the environment होगा तो ecosystem हो जाएगा. A group of similar interbreeding organism constitute species. 23. स्पीशीज कह सकते हैं, पॉपुलेशन भी कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म. तो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट स्पीशीज कंसिडर होंगी, या हम पॉपुलेशन भी कह सकते होंगे. ग्रुप का जिक्र हो रहा है डिस्कशन, ठीक है. पॉपुलेशन कंसिडर करेंगे इंटरब्रीडिंग. देन द स्ट्रक्चर विद इन द सेल इज कॉल्ड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स, या ऑर्गेनेल्स हम कहेंगे, या सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी कह सकते हैं. Then we have MCQs number 25. Life arose in this world almost 4,000 million years. यानी ज़िंदगी का आगाज़ दुनिया में 4,000 million years पहले जो है वो ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था. जब वो आप टेबल और चार्ट डिस्कस करेंगे तो इस ऑप्शन के लिहाज से तो 4,000 million years हैं. Then the basic unit of life. So it would be a cell, the basic smallest structural functional unit of life. Growing terrestrial plants in aerated solution, water soil less technique भी कहते हैं, hydroponic technique कहलाई जाएगी ये. An educated guess is called hypothesis. Then 29 would be all except dash are example of natural cloning. डायजाइगोटिक ट्विंस के अलावा आइडेंटिकल ट्विंस, ट्यूमर और माइटोसिस सब नेचुरल क्लोनिंग के एग्जाम्पल कंसीडर किए जाते हैं. उसके बाद है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. क्लोनिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ asexual मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. डेफिनेटली cloning is the method of asexual reproduction. The therapy in which radioactive rays are used for the treatment are called radiotherapy. Then the first antibiotic to be discovered was penicillin by Alexander Fleming from Penicillium fungi. Immunization and vaccination first introduced by Edward Jenner. So father of immunization or father of vaccination हम कहते हैं. 34 option A, Edward Jenner. The radiotherapy and chemotherapy used in treatment of cancer and tumor, which is almost the same thing, cancer or tumor. Malaria is caused by Plasmodium. The dash is the method of research in which a biological problem is identified, relevant data is gathered, hypothesis formulated. From these data and the hypothesis is experimentally tested. This one. So it would be known as biological method कहलाया जाएगा ये, ठीक है. 37 का चार्ली है. 38 the chemicals produced by some organisms which are capable of destroying or inhibiting the growth of another one, antibiotics consider की जाती हैं. Planning to reduce plant disease
By applying different strategies, method is termed as इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट कहलाया जाएगा, जिसमें डिफरेंट मेथड्स जो है अप्लाई कर रहे होते हैं. दैट वुड बी इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट. 39 वुड बी सी. अगर हम ऑल्टरनेट क्रॉप्स जो है वो करते हैं, काश्त करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप रोटेशन भी कहते हैं, एक ट्रीटमेंट है. ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विद एक्स-रेज or other ionizing radiation would be radiotherapy. Would be considered as radiotherapy. So 41 है, the reasoning from a specific set of observations to reach a general conclusion is called inductive reasoning. हम इसको inductive reasoning consider करेंगे, ठीक है. और अगर वो general से specific स्टेटमेंट की तरफ होगा तो हम उसको डिडक्टिव रीजनिंग कंसीडर करेंगे. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन एंड स्पेशली their role in the cell replication and the transmission of the genetic information would be considered as microbiology, environmental biology or molecular. So it would be a molecular level or molecular biology. Then the applications of organisms, biological system or biological processes to manufacture and serve industries are called. तो यहाँ पे जब हम डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस और बायोलॉजिकल सिस्टम्स को यूटिलाइज करते हैं तो दैट विल बी नोन एज बायो टेक्नोलॉजी. देन 44 वुड बी अ कम्युनिटी अलॉन्ग विद इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. इट वुड बी कंसिडर्ड एज इकोसिस्टम. And the term biology is of Greek origin, bios and logos, and the branch of biology dealing with social behavior and communal life of human being is called social biology. All the living and the non-living matter are formed of living and non-living are formed of atoms and subatomic particles. This is true. And then the deductive reasoning is always from general to specific. As we have discussed earlier, is from general to specific deductive reasoning. So 49 in chemistry, dash is defined as a sufficiently stable electrically neutral group of at least two atoms is defined as is a definite arrangement held together by chemical bond. Molecule कहलाया जाएगा, which is of stable nature. 49 का ऑप्शन होना चाहिए C. Then 50 का ऑप्शन होगा कि it is the part of the earth including air, land, surface, rocks and water within which life can exist or life can occur. So it would be biosphere. Option would be of A, biosphere. In biology, a dash is the collection of interbreeding organisms at same species, would be population. 51 would be C. It is growing of plants without soil, hydroponics. हाइड्रोपोनिक की टेक्निक कंसिडर की जाती है, इसको हम वाटर कल्चर भी कहते हैं. 53 क्या है? अच्छा, ये जो MCQs है ये आपको वो टेबल अपने सामने रखनी पड़ेगी. ज़रूरी नहीं कि आपको वो याद हो, अगर याद हो अच्छी बात है. इस MCQs में देखिएगा, द डैश पीरियड ऑफ द टाइम बिगिनिंग 600 मिलियन ईयर्स हो, यानी वो
time period which was initiated 600 million years ago ending 270 million years ago, यानी इसके बीच में falls between the Proterozoic and Mesozoic era and is divided into Cambrian, Ordovirian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian periods. तो ये पूरे के पूरे जो periods हैं वो 600 million years ago that was Paleozoic era कहलाया जाता है, ठीक है. तो मोस्टली जो फॉसिल एनिमल्स थे वो इस एरा में पाए जाएंगे. नेक्स्ट वन 54 would be of the dash period of the geological time beginning 225 million years ago and ending 135 million. तो वो टेबल अपने सामने रखें, आपको इसके MCQs आसानी से समझ में आएंगे, नज़र भी आएंगे. सो नाउ द 54 would be, we have 4 options for 54. That will be last one Mesozoic area कहलाया जाएगा, Mesozoic era, ठीक है. 54 का ऑप्शन होगा डेल्टा. 55 क्या है? The dash period of the geological time beginning after the end of the Mesozoic era 70 million years ago. So 55 will have option of Cenozoic era, this one. And 56 living together of two organisms belonging to different species getting benefit is termed as mutualism. एक दूसरे से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं अगर, तो हम इनको mutualism कहेंगे. Getting benefits is termed as mutualism. 56 का B होगा. And then 57 a symbiotic relationship in which one species benefit and the other one is not affected, commensalism. एक को फ़ायदा हो मगर दूसरों को नुकसान ना हो तो commensalism कहलाया जाएगा. commensalism, mutualism दोनों सब टाइप्स हैं सिम्बायोसिस की. a form of symbiosis in which one is getting benefit, एक को फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है. so that one would be known as, और दूसरे को नुकसान का कोई जिक्र नहीं है तो then that it will also known as commensalism. A type of association in which one organism getting benefits at the expense of the other, तो दूसरे का नुकसान हो रहा है, that will be parasitism. And the last one, life emerges in, scientists believe that life emerge in water. जिंदगी का आगाज जो है वो पानी से हुआ था, it is believed by the scientist. So it would be option beta. So student, this is the end of the first year chapter wise all MCQs. Hopefully आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, जहाँ confusion है वो clear हो गए होंगे. Thank you students.